friends, how are you? Now today I will explain chapter 3rd linear equation in two variable by R.S. Agrawal, exercise 3E, and that is the lecture number 8. Today I will explain the sums on the base of problem sums. Okay. So here problem based questions, that is the question number 1. 5 chairs and 4 tables together cost rupees 5,600, while 4 chairs and 3 tables together cost rupees 4,340 rupees. So find the cost of a chair and a table. Okay, so that is the question is based on problem sums. So here you will use the two variable. Here has given the two things, that chairs and that tables. Okay, let be the cost of one chair is X and cost of one table is Y rupees. Okay, so in this way, first of all, you will write, let be rupees X is the cost of a chair and rupees Y is the cost of a table. Yes friends, first of all you will assume, let be rupees X is the cost of a chair and rupees Y is the cost of one table. On that base, you will write according to question. According to question, first of all, 5 chairs means 5x plus 4 chairs means 4y together cost rupees 5,600. That is the first equation. Yes friends, now you will make the another second equation. अब दूसरा second equation बनाएंगे तो here the given chairs, then 4 chairs means 4x and 3 tables means 3y. Each together cost rupees 4,340. 3,440. That is the second equation. Now students, you will get the two equation. Here has given the two variable, one is X and another is Y. So in this way, when you will solve that both equations, then you will find the value of X and Y, where X is the cost of one chair and Y is the cost of one table. Yes friends, so now here again 5x plus 4y is equal to rupees 5,600.
That is the first equation. 4x plus 3y is equal to rupees 4,340 rupees. That is the second equation. Now these both equation you will solve by elimination method or substitution, okay? But it will be easy to solve by elimination method. तो now you have to eliminate any one, either x or y. किसी एक को eliminate करना है, या तो x को या फिर y को, ओके? यदि हम y को eliminate करना चाहते हैं तो y की दोनों संख्या एक बराबर होनी चाहिए. Here the number of y is 4 and here the number of y is 3. इसलिए दोनों बराबर नहीं है तो ये सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए. तो यदि हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें तो 3 4 जा 12, और यदि 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दें तो 4 3 जा 12. मीन्स दैट अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, और फिर इधर 4 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो ये 12 हो जाएगा. तो इन दिस वे you will multiply by 3 in first equation and multiply by 4 in second equation, both side. Yes friends, so then finally you will get another equation. 3 5 ja 15, 3 4 ja 12, 12y is equal to 3 0 0 0 0, 3 6 ja 18, and 3 5 ja 15 and 1 16. Okay, 16,800. Let me, that is the third equation. अब ये थर्ड इक्वेशन हो गया. Same, multiply by 4 in this, then there will be 4 4 ja 16, x 4 3 ja 12y. Now multiply by 4 in this, 4 0 0, 4 4 ja 16, 4 3 ja 12 and 1 13, 4 4 ja 16 and 1 17. That you will get the fourth equation. Now students, you will solve these both third and fourth equation. So then you will find the value of x or y. So here we are seeing that 12y and 12y both are the same number and same sign also. In that case you will write the subtract. So then it will be here minus, there minus, and it also be minus. Yes friends, now from the minus 16x में से plus 15x you will taken out, then you will get minus 1x. And here minus 12y में से plus 12y taken out, you will get 0, यानी कैंसिल कर देंगे, इसे एलिमिनेट कर देंगे, is equal to, here the given 17,360 and that is 16,800. So now you will subtract this from this. So 0 minus 0 is equal to 0. 6 minus 0 is equal to 6. Here 3 means 13. 13 minus 8 is equal to 5. Okay students. And here both 0 and 0 you will get. Then finally you will get rupees and you put the sign minus. Understood? And minus rupees 600, 560. Therefore x is equal to 560 divided by minus 1. Then finally you will get
x is equal to rupees 560. That is the answer of x. And x means that is the cost of one chair. Okay. Now you will put the value of x in first equation or in second equation. In any equation you will put, then you will find the value of y. So here on putting x is equal to rupees 560 in first equation, then students, first equation was 5x plus 4y is equal to is equal to 5,600. Clear? You put the value of x, then 5 into 560 plus 4y now multiply 5 0 0, 5 6 are 30, 5 3 are 15 and 3 18 plus 4y is equal to 5,600. Therefore 4y is equal to 5,600 and ट्रांसपोज प्लस 1800 को आगे क्या है प्लस है, तो प्लस 1800 इधर ट्रांसपोज होगा तो इट विल बी माइनस 1800. नाउ यू विल गेट, सॉरी स्टूडेंट्स, 5 6 are 30, 5 5 are 25 and 2 28. And then y is equal to 2800 divided by 4 is equal to 4 7 ja 28, 4 1 ja 4, 4 7 ja 28 and double 0. In this way we will get the 700. So unit of y is rupees. Therefore y is equal to rupees 700. Okay students, in this way answer you will write x is equal to rupees 560 and y is equal to rupees 700. Okay, that is the answer. Yes students, in this way you will get the answer. Now question number 22 also you will solve by this way. So I want to explain again this type of the sum. इस तरह का क्वेश्चन एक बार मैं फिर दूसरा भी सॉल्व कर देना चाहता हूं ताकि अगर इसमें न समझ में आए तो उसमें समझ में आ जाए. ओके, now students, question number 2 there is given
23 spoons and 17 forks together cost rupees 1770, while 17 spoons and 23 forks together cost rupees 1830 rupees. Find the cost of a spoon and that of a fork. Okay, so same way here also, let be rupees X is the cost of a spoon and rupees Y is the cost of a fork. Okay students, after that you will make the equation according to question. So then according to question, question is saying that 23 spoons, therefore it will be 23x plus 7 plus y you will write, because here the written 23 spoons and 17 forks together cost. together means दोनों एक साथ, यानी दोनों के कास्ट के लिए यहाँ टुगेदर शब्द जुड़ा हुआ है, और जब दोनों की शब्द आ गए तो इसीलिए दोनों के लिए हम प्लस लगा देंगे. तो देन इट विल बी 23x and 17 forks means 17y. So together cost has given rupees 1770. That is the first equation. And now the second equation given 17 spoons and 23 forks. 17 spoons yani 17x, it also together cost given 23y is equal to rupees 1830 rupees. That is second equation. Okay students, now here also you have to find cost of one spoon and one fork. So here also given the two variable, one is x and the other is y. In this way any one variable you will eliminate and only any one you will eliminate. So in earlier question I have eliminated 2y, but in this question now I am going to eliminate x. Okay, इस क्वेश्चन में हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में y को एलिमिनेट किए थे. ओके, मींस दैट यू कैन एलिमिनेट एनीवन, इट्स डिपेंड ऑन योर डिजायर. ये तुम्हारी इच्छा पे निर्भर करता है कि तुम किसे करना चाहते हो. तो अब इस क्वेश्चन में हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं. तो जब भी हम x को एलिमिनेट करेंगे तो इन दोनों x की संख्या एक बराबर होनी चाहिए, सेम. here given 23x, here given 17x, दोनों बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर करेंगे. इन्हें बराबर करने के लिए अगर हम 23 में 17 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो संख्या आएगी वही संख्या जब हम 23 से 17 में मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगी. अंडरस्टूड? यानी 23 में अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो संख्या आएगी वही संख्या जब हम 23 से 17 में कर देंगे तो जो आएगा वही सेम. ओके, सो here multiply by 17 in first equation and multiply by 23 in second equation and 17 multiply by first equation. Okay, now when you do multiply, then what you will get? After multiply you will get
17 into 23. And 23 into 17. When you will do multiply, so 7 3 ja 21, 7 2 ja 14, and 2 16. 1 3 ja 3 and 1 2 ja 2. In this way, students, you will get 193. Then you will get 391x plus 17 into 17. It will be 289y is equal to, when you multiply by 17 in 1770, then you will get 1090 you will get. Okay, and that will be the third equation, students. Okay, again when you multiply by 23 in 17, then also you will get 391x plus, when you multiply by 23 in 23, and then you will get 529y is equal to, now again you will multiply by 23 in this, then it will be that is the fourth equation. Okay, students, here no need to write the rupees because the unit of x and y are rupees. Okay, तो हम यहाँ लिखना आवश्यक नहीं, हम बाद में लिख देंगे, लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तब लिखेंगे रुपीज. ओके, नाउ यू विल सॉल्व दिस थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन. बाय द सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, so again you write here 391x plus 289y is equal to, now since I want to first of all here you write by solving third and fourth equation. ओके, अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के द्वारा देखो इसमें इसकी संख्या मैक्सिमम यहाँ भी है, यहाँ भी मैक्सिमम है. ओके, तो देन and I have given 391x plus 529y is equal to 42,090. So here students, now you will subtract because here the same sign has given, same sign plus here plus 391, here also plus 391x, so you will write subtract
and put the sign minus here also, here also, here also. So then from minus 391x में से plus 391x taken out, and then you will get the 0 here. Okay, and no need to write the 0 here, 0 लिखने की जरूरत नहीं है. Here minus 529y and that is given plus 289y. That is the maximum, it is the greater number and that is smaller number. तो इस greater number में से ये smaller number निकल जाएगा. कब? जब ये साइन अपोजिट हो तब. तो अपोजिट साइन है, ये माइनस 229 है, ये प्लस 289 है, इसलिए इसमें से ये संख्या निकल जाएगी. यानी 9 में से 9 गया 0. हेयर यू विल गेट द 2, बोरो लेगा 12 हो जाएगा. 12 में से 8 गया 4, एंड हेयर यू विल गेट 4 में से 2 गया 2. Yes friends, and sign will be minus y is equal to, same way here also you will subtract. अब यहाँ पे प्लस 30,090 and here the minus 42,090 given. यानी कि अपोजिट साइन है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस वाला इस माइनस में से इतनी संख्या निकल जाएगा. तो देन व्हाट यू विल गेट, यानी 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 0 में 0 गया 0, हेयर 2 में से 0 गया 2, एंड हेयर 4 में से 3 गया 1, एंड दैट साइन गिवन माइनस. स्टूडेंट्स, therefore y is equal to minus 12,000 divided by minus 240. Okay students, तो then first of all 0 से 0 कैंसिल, और माइनस से माइनस में डिवाइड कर देंगे, तो then you will get plus 1 2 and 00 divided by 24. ओके, अब 12 से काट देंगे हम, 12 से काट सकते हैं. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, और ये पूरा काट देंगे तो ये 0 0 भी कर जाएगा. ओके, यानी हम 12 से इसे रिड्यूस करेंगे तो 12 1 जा 12 and 00 and here 12 2 जा 24. फाइनली y is equal to, अब 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 50. तो अब इसका जो यूनिट है y का वो रुपीज है, यहाँ पर लिख देंगे ₹50. ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर इट्स आंसर विल बी x इज इक्वल टू व्हाट डू यू गेट, oh sorry, now y value you get, understood. Now when you put the y is equal to 50 in first equation or in second equation, then you will get the value of x. Okay, now here you write so now on putting y is equal to 50 in first equation. Okay, so then first equation was 23x plus 17y is equal to 1770. That was the first equation. Okay, now here you write the value of y की जो वैल्यू है लिखेंगे 23x plus 17 into value of y given 50 is equal to 1770. Okay,
and then 23x is equal to 17 5 जा 85 एंड 0 यानी 850 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। यहाँ पे जो 850 आएगा उधर ट्रांसपोज कर देंगे एंड फाइनली यू विल गेट, फाइनली व्हाट यू गेट, 0 में से 5 0 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 7 में से 8 गया नहीं जाएगा 17 में से 8 गया 9। Dear students, in this way x is equal to 920 divided by 23. Dear students, so 23 1 जा 23 and 23 4 जा 92। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों रिड्यूस होगा, ऊपर बचेगा 4 एंड दैट 0 इज इक्वल टू 40। ये स्टूडेंट्स, और इसलिए लास्ट में इसका यूनिट एक्स है, यूनिट रुपीज, सीधे लिखेंगे रुपीज 40। ये स्टूडेंट्स, इन दिस वे इट्स आंसर विल बी, answer will be x is equal to rupees 40 and y is equal to rupees 50. That is the answer. Any doubt students? So in this way students you can do further all questions, understood, and remaining questions which is other types that I will explain tomorrow. Okay.